इंटरेस्टिंगली ना, जब वो वापस आते हैं, दैट तब उनकी ज़िंदगी एक और मोड़ पे जाती है। जिस चीज़ के लिए वो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो उनकी तफसीर है, जो कि दुनिया की सबसे मशहूर तरीन तफासिर में से एक तफसीर है। उसका नाम है फीज़िल कुरान, विच मीन्स लाइक द अंडर द शेड्स ऑफ कुरान। कि किस बुनियाद पे हम कहते हैं ओके खिलाफा मिनहाज नबूवा, दिस इज द आइडियल। अमेरिका सीम्स लाइक अ वेरी रिलीजियस स्टेट। ठीक है, और उसका मकसद क्या है कि कैसे देयर विल बी दिस ग्रैंड चर्चेस जहां लोग कैसे मिल रहे हैं एंड देयर सिंगिंग हालेलुया और जो भी है एंड साम्स एंड व्हाटएवर। बट व्हाट कैसे थे सईद कुतुब ऑब्जर्व्स इज वेरी ब्रिलियंट। ही सेज कि बेसिकली दीज आर जस्ट पार्टीज फॉर द चर्च गोअर्स। कि ठीक है, यू हैव ऑल दिस ग्रेट कार्स एंड यू हैव ऑल दिस ग्रेट थिंग्स, बट व्हाट डू यू एक्चुअली गिव टू द वर्ल्ड? what is it that मतलब आप दुनिया को क्या दे रहे हो? and the core of that is कि there is nothing that America has given to the world in last 200 years. The America I have seen by Syed Qutb. Oh, have you heard about Gen Z Bible? Gen Z Bible. No. It is a Bible written in Gen Z lingo. نحن ندخل مرة أخرى في عصر الجاهلية. Right? So ये उसका शेर नहीं है, किसी और का शेर है, but that's what he's thinking in. हम दोबारा एक जाहिली दौर की तरफ जा रहे हैं. ignorance की तरफ जा रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम कमरान. वालेकुम अस्सलाम अफनान, क्या हाल चाल है? काफी दिनों बाद हैं. हाँ, वेलकम बैक टू पाकिस्तान. दिस इज योर Yeah. फर्स्ट वीडियो इन पाकिस्तान, राइट? I think so, yeah. I mean हम वो लेक्चर्स कर रहे थे, so मैं कुछ दे देता हूँ और डिस्क्लेमर्स वगैरह, राइट? डिस्क्लेमर्स नहीं, प्रमोशनल स्टफ, राइट? वन, सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करें. नंबर टू, हम लेक्चर्स कर रहे हैं पैलेस्टाइन सिंपोजियम, जहाँ पे हम 12 लेक्चर्स हैं और हम पैलेस्टाइन को की डिटेल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट? वी डूइंग उर्दू एंड इंग्लिश वंस. तुम लोगों ने जो वाले भी ज्वाइन करने हैं तो प्लीज ज्वाइन, राइट? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देंगे दोनों चीजों का इंशाल्लाह. या लेकिन आज हम करने वाले हैं कामान क्या. या आज हम लोग कैसे कहते हैं, किताब है. इट्स नॉट इवन अ किताब, इट्स अ पैम्फलेट ऑफ सॉर्ट या विच इज कॉल्ड द अमेरिका आई हैव सीन बाय सईद कुतुब. ठीक है, तो तो मुझे इंशाल्लाह एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स राइट नाउ एज वेल. लाइक क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कैसे थे डिस्कशंस इन चीजों पे काफी ज्यादा ही हो रही है ना, तो इट्स अ गुड तुम टाइम. मुझे तुम मुझे अमेरिका पे बैन करवा के छोड़ोगे ना. पहले मैं कैसे आने से पहले ना आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस. आई वाज लाइक कैसे अफनान डजंट हैव अ लॉट ऑफ चांस ऑफ गोइंग बैक, बट चलो अल्लाह करम करे, अल्लाह बेहतर करे. बट जस्ट लाइक चलो लेट्स देखा स्टार्ट जाएगा. दिस. ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू अ lowdown on सैयद कुतुब, राइट? बहुत से लोग उसको जानते होंगे, नाम तो कभी कभार आपने सुना ही होगा, ठीक है? ही इज प्रोबेबली द बिगेस्ट इख्वानी पब्लिक पर्सन दैट इज नोन. लाइक अगर इख्वानी, तुम कोई भी इख्वानी नहीं जानते तो एटलीस्ट पीपल नो हिज नेम, राइट? क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन हमारे यहाँ भी नाम चलता रहता है. उसको अक्सर मिडिल ईस्ट का मौदूदी भी कहा जाता है, या मौदूदी को बद सग़ीर का सैयद कुतुब कहा जाता है. कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस पर बहस हो सकती है. आई थिंक सैयद कुतुब के ट्रायल में बात पता चल गई थी, जब उससे पूछा गया कि मतलब तुम्हारे और मौदूदी के बीच में क्या फ़र्क है, and he answered la fark, there's no difference, right? So I would say Sayyid Qutb would say that he's the one following Maududi, but Sayyid Qutb took it a bit further, right? लेकिन Sayyid Qutb स्टार्टिंग में इस तरह नहीं था. मौदूदी रहमतुल्लाह वो एक आलिम दीन थे शुरू से ही, मतलब वो सब काम करते थे. he's a political activist and he's a religious scholar. सईद कुतुब एक अदब निगार थे, राइट? सो वो एक नावल निगार थे, वो लिटरेचर लिखते थे, और ये उनका मेन काम था, लिटरेचर लिखना, इस तरह की चीज़ें करना. और वो काफ़ी अच्छे कभी दीदार ख़ानदान से थे, मतलब ख़ानदान दीनदार था, उन्होंने हिफ्स वगैरह किया हुआ था आई बिलीव. लेकिन मतलब वो दीन के इतने वो करीब नहीं थे उन दिनों में. अमेरिका में वो जाते हैं तकरीबन उतने टाइम के लिए जितना टाइम मैंने वहाँ गुजारा है. तो वो गए थे तकरीबन 1.5 साल के लिए वो जाते हैं. और उनका मकसद मतलब इट्स काइंड ऑफ एजुकेशन, बट इट्स लाइक वो जो स्टूडेंट एक्सचेंज नहीं होता, हाँ. इट्स मोर लाइक दैट. ही इज लाइक हाई लेवल स्टूडेंट एक्सचेंज. वो कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं,
आई थिंक स्टैनफोर्ड में भी उन्होंने पढ़ा था, बट आई थिंक वन ऑफ द आईवी लीग्स में भी पढ़ा था, बट आई डोंट नो इफ इट वाज स्टैनफोर्ड, आई थिंक इट वाज स्टैनफोर्ड। और जो ये उनको मतलब एक एडवांटेज मिलता है एज अ स्टूडेंट एक्सचेंज, एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट, इज वो अमेरिका को बहुत करीब से देखते हैं, राइट? सो समवन लाइक मी, मैं चर्च वगैरह में गया हूँ, मैं लोगों के साथ उठा बैठा हूँ, बट आई एम वेरी लिमिटेड, क्योंकि मुझे मतलब मैं आई एम नॉट लिविंग इन अमेरिकन हाउसेज, अनलाइक सैयद कुतुब इज लिविंग विद अमेरिकन पीपल, वो अमेरिका के लोगों के साथ रह रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। तो उसका एक बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। इंटरेस्टिंग नहीं ना, जब वो वापस आते हैं, दैट तब उनकी ज़िंदगी एक और मोड़ पे जाती है। जिस चीज़ के लिए वो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो उनकी तफसीर है, जो कि दुनिया की सबसे मशहूर तरीन तफसीर में से एक तफसीर है। उसका नाम है फी ज़िलाल कुरान, विच मीन्स लाइक द अंडर द शेड्स ऑफ कुरान, राइट? तो बहुत मशहूर, बहुत मतलब एक पॉलिटिकली एक्टिव तफसीर है, राइट? अगर तुम मौदूदी साहब की तफसीर को उठा के देख लो, उसको कंपेयर करो, आई वुड से कि मौदूदी साहब की तफसीर फिर भी बहुत ज़्यादा इल्मी तरफ ज़रा झुकती है। हम्म। सैयद कुतुब रहमतुल्लाह की तफसीर, उसकी तफसीर बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अगर तुमने मतलब वो एक बारोमीटर लगाया हुआ है कि ओके कितना कितना पॉलिटिक्स है और कितना मतलब इल्मी एक शौक है। And what I would like to call Sayyid Qutb is not an alim, but a rhetor, a rhetorician, right? क्योंकि जिस चीज की वजह से वो मशहूर होते हैं वो उनकी बलागत है। अगर तुम उसकी माइलस्टोन्स पढ़ो, जो कि वो किताब है जिसकी वजह से वो कत्ल हुए, राइट? नासिर के रिजीम के हाथों, राइट? एंड इट्स कंसिडर्ड हिज मोस्ट एक्सट्रीम बुक। तो वो, it's more of a rhetorical book. It's not like he's not really going and saying, okay, like fatwa jadi kar raha hu and I'm gonna go into a lot of details. He does ilmi stuff. It's not like, oh, it's empty of ilm, but rhetoric is the key point. The language he uses, the emotions, it just like the whole thing, right? And one of the things he uses as a rhetorical tool is jahiliya, right? Uh, So it's like, the Arabi شعر نحن ندخل مرة أخرى في عصر الجاهلية, right? So ये उसका शेर नहीं है, किसी और का शेर है, but that's what he's thinking in. हम दोबारा एक जाहिली ऑफ तौर की किसके तरफ थे, जा रहे हैं। इग्नोरेंस की तरफ जा रहे हैं। हाँ, असल में आसर जाहिलिया यूज होता है टेक्निकली स्पीकिंग, इस्तिलाही तौर पे प्री प्रोफेटिक एरा को। हाँ। अरबों का प्री प्रोफेटिक एरा था, उसको जाहिली एरा कहते हैं, राइट? आसर जाहिलिया, हम्म। वास्तव जाहिलिया। तो वो यही उसकी बलागत की मतलब एक कुंजी है कि वो कॉन्सेप्ट्स लेता है और फिर वो उनको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, लाइक पुरानी टर्मिनोलॉजी को मॉडर्न के कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलाता है, एंड देन ही इज टेलिंग यू एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, राइट? हम एक जाहिली दौर से गुजर रहे हैं, देयर इज नो मोरालिटी, दैट्स नॉट व्हाट्स हैपनिंग। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम देखो ना, जो अमेरिका का डॉक्यूमेंट वो लिख रहा है, इट्स इन द मिडल, हाँ, this is published in 1951 and या Syed Qutb, if I remember correctly, like Jamal Abdul Nasir के हाथ, this is like 1965 जब उनकी इट्स इन द कत्ल। 60s, या हाँ, इट्स इन द 60s में 60s, तो, या and he was in America between 1948 to 1950, तो 2 साल या अमेरिका में थे उनके। या तो दिस इज व्हाई लाइक मेरे लिए दो वजूहात की वजह से डॉक्यूमेंट, इवन दो इट्स वेरी स्मॉल डॉक्यूमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट रियली गोना गो इनटू एक्सप्लेनिंग द डॉक्यूमेंट, वी आर गोना डिस्कस द डॉक्यूमेंट मोर, बट द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम देखते हो एक ऐसा बंदा जो लिटरेचर की के तो में के तरफ में सोचता है, राइट? सो ही इज थिंकिंग इन आर्ट, ही इज थिंकिंग इन ब्यूटी, ही इज थिंकिंग इन दैट काइंड ऑफ स्टफ, ही इज थिंकिंग वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। फिर ऑन द अदर हैंड वो बहुत ज्यादा एक रिलीजियस और मॉरल एथिकल नजरिए से सोचेगा, एक बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज नजरिए से सोचेगा। एंड देन यू हैव दिस पर्सन इन द मिडल, जो अभी मतलब ना इधर का है ना उधर का है, ही इज गोइंग थ्रू अ फेज। और अमेरिका में उसका जो एक्सपीरियंस होगा, वो उसको, बहुत से लोग कहते हैं कि वो उसको रेडिकलाइज करता है। एंड दूसरी वजह जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है, दैट्स बिकॉज अपना मेरा जो एक्सपोजर रहा है अमेरिका में, स्पेशली इन द रिलीजियस सर्कल्स ऑफ द मुस्लिम्स, राइट? And it's going to be very fun to apply that. So let's just jump into the document. I think हमने context अच्छे से explain कर दिया है. What was your impression, right? Yeah, you know what? Like everything else aside from the book, मतलब book is very interesting in itself. जैसे हम लोग बात कर रहे थे, you know what was my favorite bit in the book?
एंड कैसे थे, आई कांट रीड कैसे थे बुक्स ऑन पीडीएफ, आई कुडंट फाइंड, मुझे ये प्रिंट करनी पड़ी पहले। आई थिंक 20 पेजेस की है बाय द वे। हाँ हाँ। समवेयर राइट इन कैसे थे, ही टॉक, दो चीजों की जो बात है ना दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक वो बात करते हैं प्रिमिटिवनेस इन एथलेटिक्स, बीच में बेसिकली बात होती है कि कैसे कहते हैं हाउ जो अमेरिकन एथलेटिक्स हैज नो ग्रेस और एनी सॉर्ट ऑफ हाउ डू यू से फिनेस टू इट, इट्स हम्म। जस्ट, इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिकन आइडियलिज्म इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, जिसमें हम्म। बेसिकली व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स, इट्स कॉल्ड फुटबॉल, बट इट्स नॉट इवन प्लेड विद फुट, एंड द बेसिक जिसको जिसको एम। जिसको हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अमेरिकन फुटबॉल कहते हैं, जस्ट फॉर हाँ, कॉन्टेक्स्ट, या रग्बी। नॉट सॉकर। हाँ, रग्बी, रग्बी। हाँ। और आपका कैसे कहते हैं गेम में कैसे कहते हैं एम क्या है कि आपने किसी को नीचे गिराना है, एंड दिस इज हिज कमेंटरी राइट, एंड ही सेज दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिकन आइडियलिज्म इन इट्स एसेंस। एक तो ये बात होगी, ठीक है। And दूसरी बात विच इज सो ट्रू, विच इज सो ट्रू, दिस इज समथिंग ही राइट्स अंडर अमेरिका emerges from isolation, basically वो ही इज विजिटिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, and कैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद थोड़ा देर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन, एंड ही राइट्स दिस लाइन, ही राइट्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस illusion came into being given this his nation's history with warfare. The illusion was कि कैसे कहते हैं अमेरिका इज ए पीसफुल लविंग कैसे कहते हैं नेशन, ठीक है। Yeah. एंड ही मेक्स अ वेरी गुड पॉइंट कि हाउ डिड दिस illusion come about is what we need to ask ourselves as well. So these are two things, like everything else in the document is brilliant as well. जब वो डेथ के बारे में बात कर रहे थे एंड रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल जो रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट था राइट, वेर ही टॉक्स अबाउट के द एंटायरिटी ऑफ द चर्च इटसेल्फ इज अ पार्टी, ठीक Yeah. है। जो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज अगर आप अमेरिका को वैसे देखो ना फ्रॉम लाइक एटलीस्ट इन लास्ट 20-25 years, अमेरिका सीम्स लाइक अ वेरी रिलीजियस स्टेट, ठीक है। और उसका मकसद क्या है कि कैसे कहते हैं देयर विल बी दिस ग्रैंड चर्चेस जहां लोग कैसे कहते हैं मिल रहे हैं एंड देयर सिंगिंग हालेलुया और जो भी है एंड साम्स एंड व्हाटएवर। बट व्हाट कैसे कहते हैं सईद कुतुब ऑब्जर्व्स इज वेरी ब्रिलियंट, ही सेज कि बेसिकली दीज आर जस्ट पार्टीज फॉर द चर्च गोअर्स। और आपको जरूरत है कि इन जगहों पे आपको स्नैक्स चाहिए, आपको कैसे कहते हैं ड्रिंक्स चाहिए, तभी लोग आएंगे। दिस इज द मेन अट्रैक्शन। लोग चर्च इसलिए नहीं जा रहे कि कैसे कहते हैं एक वो फीलिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो, एंड विच इज व्हाट ही बेसिकली कैसे कहते हैं ही ट्राइज टू टाइज इट डाउन टू दैट एज वेल, कि जो अर्ली चर्च कह रहा हूँ सॉरी, अर्ली अमेरिकन सेटलर्स थे, हाउ दे हैड अ ब्लैंक कैनवस ऑफ सॉर्ट within the American society. It's a very interesting, like, I know I've gone a bit long on किसी तरह जो monologue of the initial impression, but it's a very interesting book. We wanted to have another of our friends on this. Yeah. Hashim, unfortunately, he's not here, but he'll be here as well. He found it very interesting as well because I am a bit less, how do you say, influenced by Western ideology now. मतलब if I would have read this like about 5-6 years ago, तो मैं कहता कि वाकई में यार this is like life changing. But it is life changing for those who still come into that perception ना कि अमेरिका इतना अच्छा मुल्क है. It is, I mean, there are like a lot of those observations, but I'm at that stage of my life where this illusion of American imperial, It's already American, broken. हाँ Yeah. क्या कह रहे हो? Yeah. जो illusion है वो पहले से टूट चुका हाँ है. पहले So टूटी it's है not तो a, हाँ it's not a, yeah. and you know there was this one another bit which was very interesting for me somewhere in the book, he book pamphlet however you want to, he talks about death in America, like how people view death in America. Yeah. तो पहले वो कैसे अमेरिका के एग्जांपल देता है, and then he talks about how for example when he was a kid he saw the death of a crow, एंड जो बाकी कौवे थे वो कैसे कहते हैं दे वुड पे रिस्पेक्ट टू द डेड क्रो। एंड मैं यही सोच रहा था कि यार दिस इज लाइक सो रियलिस्टिक। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इवन लेट्स सपोज कहीं बिल्ली मर जाती है ना, ठीक है, एंड वी डोंट नो द बिल्ली मैन, वो मतलब Yeah. एक तो अपनी पेट है ना, चलो समझ आती है, वी डोंट नो द बिल्ली। अगर कैसे तो देख रहे हो majority of us will try to at the worst case scenario if it's like right in the middle of the road, what we'll try is at least let's put it on the side ताकि कैसे कहते हैं उसकी बॉडी की बेहुरमती ना हो, ठीक है। इट्स जस्ट अ कैट, ठीक है। Yeah. अगर आपने थोड़ा और करना है तो लोग ये भी करते हैं कि लोग दफनाते भी हैं अपनी तरफ से, इट्स जस्ट अ कैट अगेन। Yeah. बट देयर इज ए डिफरेंट व्यू ऑफ कैसे कहते हैं डेथ विद इन आवर सोसाइटीज एनीवे। बट एनीवे योर टर्न। Yeah. I mean, तुमने सारी बातें बता दी जो बुक में है, राइट? बट जो जो मुझे, जैसे तुम बात कर रहे थे ना,
तो मैं I'm always thinking about like my own experiences in America हाँ and it's just so interesting to kind of see. So पहली बात शुरू करते हैं जो तुमने भी मेंशन की primitiveness, right? जब मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था एंड इट वाज वेरी अमेजिंग बट इट वाज मोर बेनिफिशियल जब मैंने तकरीबन एक साल पहले जब मैं अमेरिका में ही था एंड इट वाज जस्ट लाइक आई वाज स्क्रॉलिंग इट केम इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई रीड एट इट मुझे इतना मतलब वो उस वक्त इतना लाइक मूविंग लगा क्योंकि अब मैंने अमेरिका को देखा हुआ है एंड आई नो दैट ही इज सो राइट अबाउट सो मेनी थिंग्स तो मैंने क्या किया मैंने अपने सारे अमेरिकन दोस्तों को भेजा Not a single one read it. Not a single one. But मैंने उन सबको भेजा and I was like, this is like you guys, and it's 20 pages. Like people read a lot in America, but no one read it, unfortunately. Because Syed Qutb के नाम से भी बहुत लोग डरते हैं ना By the way, वहाँ पे. by the way, But just this is what Hashim told me after reading that document. He was like, "यार मैं सिर्फ एक चीज," and this is what he said. He said, "कि the only thing we should be allowed to do as mhm. Muslims, as like non-Westerner, is to judge our own people based on our own understanding of them." क्योंकि Yeah, हमारे यहाँ कैसे कहते हैं, एक ऑटोमेटिकली एक लेबल अटैच हो जाता है ना विद पीपल, yeah, बिकॉज yeah, हमारे भी माइंडसेट्स वही एक कलोनियल माइंडसेट के और एक कैसे कहते हैं इंपीरियलिस्ट माइंडसेट की सोचे हैं हमारी भी, yeah, कि फॉर एग्जांपल अगर सईद कुतुब हो गया या कैसे कहते हैं लेट्स सपोज शेख अब्दुल्ला आजम इज आल्सो समबडी हु इज लाइक yeah, कंसीडर्ड yeah. लाइक Absolutely, yeah, रेड लाइन एज वेल, yeah. और इनके नाम सुनते साथ ही यू आर जस्ट लाइक पुट इनटू दैट वो जो रेडिकल कॉर्नर में आप चले Category. जाते हो। हाँ, हाँ हाँ. लेकिन तो किसी ने पढ़ा नहीं. But I was surprised because इतनी मतलब मैं तुम्हें primitiveness की बात करता हूँ, right? So जो दलाइल वो देता है वो यही है कि पहली बात जो लोग आते हैं वो बहुत स्पेसिफिक टाइप के हैं राइट एंड ही सेड मोस्ट ऑफ देम आर ईदर क्रिमिनल्स और एडवेंचरर राइट आई वुड ऐड अ थर्ड कैटेगरी टू इट व्हिच इज पीपल एस्केपिंग ब्रिटेन एंड अदर लाइक रिवोल्यूशनरीज जो वहां के मतलब वो होते हैं जो किंग के खिलाफ काम कर रहे होते हैं देन दे हैड टू एस्केप एंड कम टू अमेरिका बट वन व्हेन दे आर गेटिंग टू अमेरिका ये वो लोग हैं ना जो बिल्कुल इनलाइटनमेंट के बिल्कुल like these are the most enlightened, right? हाँ Enlightenment इन्होंने कूट कूट के पी हुई है एंड वो आते हैं और वो अपने साथ एक बिल्कुल एक स्पेसिफिक माइंडसेट लाते हैं and that's what you see in America. America is जो American soul है. It's a soul of a conqueror, but not of a conqueror who wants to conquer for something beyond the material. There is no like अगर अमेरिका को तुमने एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, it is lacking like no metaphysical, right? हाँ It's anti-metaphysical. उसको metaphysical चीजें कोई भी चीज जो मादी से इतना मतलब ऊपर जाती है ना, he doesn't like it. और तभी वो जो चीजें मादियत से ऊपर है ना वो उनको नीचे लाने की कोशिश करेगा he's gonna bring it down he's gonna tear it down ताकि उसको वो उस पे ले आए राइट एंड जो primitiveness वो बात कर रहा है और जिस लेवल पे and it's interesting कि he recognizes their value in efficiency and हाँ materialism Yeah, and this is what he says scientific discovery. very early on in the book, right? This is what he says. Where is that? Most of the value in what thing कहाँ गया? But you I continue. think I'll it's try line. to find it. Yeah, yeah. So basically, I think it's on page 1 to 2. ठीक है हाँ वो यही बात करता है कि this whole thing about they're really good in materialism बहुत ज्यादा अच्छे हैं साइंस वगैरह में लेकिन जब बात आती है मोरालिटी की जब बात आती है आर्ट की जब इन चीजों की बात आती है वो फिर वो उनके एक कैप लगा हुआ है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट गोज इनटू ऑल द अदर थिंग्स एट द कोर ऑफ द थिंग वो बिल्कुल लाइक कूट कूट के एक एनलाइटनमेंट बेस्ड मटीरियलिस्ट कंप्लीटली मटीरियलिस्ट सोसाइटी है अगर तुम यूरोप को देखो हम्म यूरोप लोगों के जहन में यूरोप इज द मोर एनलाइटेंड लाइक द मॉडल ऑफ मोर ऑफ एनलाइटनमेंट बट यूरोप के यहाँ अभी भी वो जो पुरानी मतलब वो जो चीजें ट्रेडिशनल पड़ी हुई है ना हाँ और इसके एक एग्जांपल तुम ले लो फ्रांस से ओके फ्रांस हेट्स रिलीजन जो फ्रांस के सेकुलरिस्ट है ना उनको मजहब से ये नहीं है कि उनको मजहब मतलब दे डोंट केयर अबाउट दे हेट रिलीजन हम्म जो अमेरिकन सेकुलर है ना वो रिलीजन को एज अ जोक समझते हैं दे कैन बी एनी वन दे डू नॉट टेक इट सीरियसली दैट्स व्हाई उनके जो चर्चेस फुल होंगे सब चीजें फुल होंगी बट एनीथिंग विद अ बिट ऑफ जो जिसके थोड़ी सी भी इलाहियात का मतलब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है वेदर इट बी मौत चर्च इबादत एनीथिंग उनको उसको रिड्यूस करके 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 उसको एक बिजनेस
मार्केटेबल वेंचर बनाना है, राइट। एंड रिलीजन पे मैं आता हूँ, दैट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बट By अभी the याद है way, मौत, सिर्फ by मौत, the या way, हाँ। this is what he says. He says America's productivity is unmatched by any other nation. It has miraculously elevated life to levels that cannot be believed. But man cannot maintain his balance before the machine and risks becoming a machine himself. Yeah, and Basically, that's yeah. Translate. Yeah, हाँ, tarjum. बेसिकली वो कैसे थे, यही बात है कि कैसे थे, इतने अच्छे तरीके से अमेरिका ने हाउ डू यू से मैकेनाइज कर दिया हुआ सब कुछ, प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, कि अब इस वक्त वो खतरा हो रहा है कि जो इंसान है वही मशीन बन जाए, विच इज समथिंग कैसे थे years ago, much years early on in even in America. Adam Smith talks about this as well, Yeah, कि आप कैसे थे कैपिटलिज्म को इस एक्सटेंट तक ले जाओगे कि ह्यूमंस विल स्टार्ट लूजिंग देयर जो इनर ह्यूमैनिटी है, ठीक है, एंड दिस इज अल्टीमेटली व्हाट अमेरिका हैज टू ए लार्ज एक्सटेंट सक्सेसफुली अचीव्ड. yeah. बट कंटिन्यू. आई मीन इकबाल राइट, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, राइट। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। एंड जो शेर है उसमें सिर्फ एक ही कमी है, वो ये है ना कि ही इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, बट व्हाट सईद कुतुब इज डूइंग इज आइडेंटिफाइंग द सोर्स। जो अमेरिकन आइडियल है, लाइक द अमेरिकन ड्रीम, द अमेरिकन थिंकिंग, द अमेरिकन मेटाफिजिक, इट इज, उन्होंने बाइबल के साथ क्या किया, उन्होंने उसको एक प्रोग्रेसिव, उसको क्या कहते हैं, जो मनी प्रोस्पेरिटी बाइबल, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल, या प्रोस्पेरिटी गॉस्पल बना दिया। तुम उनके मजहब को देखो, लाइक देयर प्रीचिंग इज ऑल अबाउट how to get how to, oh, God loves you, God doesn't want you to suffer in this world, all that kind of stuff. There is nothing beyond the now, जो अभी हियर एंड मेरे नाउ. सामने मटीरियल रियलिटी है। एंड उसने एक जबरदस्त चीज दी है, जहां पे उसने एक एडवर्टाइजमेंट कैच किया हुआ है एक चर्च का, हाँ, राइट। we'll आई put किड यू नॉट, I'll put that up over in this as well. या With आई this. आई किड यू नॉट, तुम उसको ढूंढो, आई किड यू नॉट। मैं लाइक जो सबसे मुझे मुश्किल तरीन चीज लगी थी ना टू सॉल्व व्हेन आई वेंट टू अमेरिका वाज हाँ, बीइंग इन अ मस्क। being in. तो हमारे साथ मस्जिद में होना, हाँ, हाँ, इट वाज द हार्डेस्ट थिंग फॉर मी, बिकॉज जो हमारा मतलब स्कूल का मस्जिद था ना, वो बहुत ज्यादा इट्स लाइक मसल्ला, मस्जिद नहीं मसल्ले जैसा है, राइट। तो बाहर कॉलेज पड़ा हुआ है, इधर एक मसल्ला है, लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं, एक इमाम रातिब है, हम उस तरह, राइट। जो हमारे जिस मस्जिद में हम जुम्मे के लिए जाते थे, तो वो एक सलफी टाइप मस्जिद है, और दोनों ने एक घर सा लिया हुआ है, और वो घर है और उसमें जो तुम जाते हो मस्जिद, बट दीज आर नॉट एक्चुअल मसाजिद। मैं दो तीन एक्चुअल मसाजिद में, वहां एक्चुअल मस्जिदें कम होती है, राइट, उनमें मैं गया। अमेरिकन मस्जिद डराती है मुझे, लाइक मुझे खौफ आता है। एंड वजह क्या है, इट इज लिटरली अ मार्केट प्लेस, इट लिटरली अ मार्केट, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक तुम अंदर जाते हैं, ऑल यू सी इज जस्ट लाइक somebody is trying to sell me something, that's what you feel, right? purest form of capitalism. जहां पे, जो मैं मस्जिद का नाम नहीं लूंगा, बट वहां की, उस बे एरिया इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है, राइट। वहां Now पार्टी we है, can all find it out if you want. Bay Area की yeah. सबसे बड़ी मस्जिद. I'm not sure if it is, but I think it is, right? But it's the biggest, probably the Sunni masjid, if it is, right? But उसमें तुम जाते हो, one, जो दरवाजे है उस पे अमेरिकन फ्लैग लगा हुआ है। I told you, right, like in Pakistan, just imagine Pakistan का flag on the masjid just raised up, दो तीन दिन में कोई ना कोई लाइक उतार देगा, कहेगा ये क्या है, ये क्या तुम क्या कर रहे हो, ये मस्जिद है क्या है, राइट। एंड एवरी डोर हैज एन अमेरिकन फ्लैग। अंदर जाते हो, the whole system is built up, जो speeches होगी, they are basically speaking in extremely, this is it, it's full of capitalism, it's full of market vocab, right? Free market Yeah, capitalism. yeah. The examples, जो examples है वो उस तरह है, जो advertisement तुम देखते हो, right? You have things, oh, tonight we're gonna have this maulid, and we're gonna have pizza, and we're gonna have this and this and this and this. That's everything is just about like we have to do this party. मेरे एक दोस्त के साथ एक बहस चल गई थी, एंड इट वाज अबाउट ड्रेसिंग। तो मैंने कहा, देखो मुझे समझ आती है कि अगर कोई मुसलमान मतलब नमाज पढ़ने आते हैं, एंड दे आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड फॉर द नॉर्मल नमाज, लाइक अगर असर की नमाज हो रही है, राइट, वो आते हैं,
and they're wearing something like spandex or something, right? नहीं पहनना चाहिए, लेकिन it's America, it's okay, like we'll tolerate. मैंने कहा जुम्मे के लिए जब लोग आते हैं ना, तो वो सोच समझ कर आते हैं। खासकर जो जुम्मे के लिए औरतें आती है, उनको पता है this is something specific, like you dress up in a particular way, you get a hijab, you come, and I said, फिर तुम उनकी जो 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 उनका लिबास है, या जो उनके चलने का स्टाइल, whatever, like the whole thing, right? And he talks about this. He talks about just making the masjid into this, the masjid, the purpose of the church. The He church. doesn't talk about masjid, right? The purpose of the church is fun. The key purpose, like जो underlying purpose है, and उसकी जो मेरे खिलाफ argument थी ना, वो simply ये थी, we cannot tell people to not do this because vibe नहीं आएगी. Like this was the core of the argument. It's all just about how do we make it more vibey, right? मेरे एक कुछ Yeah, basically the idea is how to make it more commodifiable, more yeah, sellable. yeah, exactly. It's all about just making it, the nicest, this, they love music in the masjid. And I'm talking about Islamic music. I'm talking about Maulid. And मुझे जायज ना जायज की बात भी नहीं है. It's just the idea of like, जो तुम्हारा primary focus है, मस्जिद में जाने की जो सबसे primary वजह है, it's about like, oh, I want to go there. Oh, there's Maulid today, and we're gonna have like a whole night of fun. Ramzan is just a headache in this sense, right? पार्टियां, ओ आज टाको ट्रक आ रहा है, आज बर्गर, आज मस्जिद के बाहर बर्गर ट्रक होगा, आज टाको ट्रक होगा, ओ आज हम पूरी रात, in the last 10 nights, right? You just for the sake of it, you sound like you really didn't enjoy your time in America. Don't you want No, to know? no, it's not about enjoy. It's just about the fact. Like for me, it's just about the fact. Okay, I love. I think हमारे यहाँ, we need more, kind of cultural Islamic, मौसीकी, शायरी, all that stuff. I am not against it. मुझे यहाँ के मसाजिद से भी बहुत बड़ा मसला है. It's on the other extreme. जो मुझे वहाँ के मसाजिद से, like for example, यहाँ के जो शहर के मसाजिद है, I would like to see female sections in every masjid. Like it's a mandatory thing that should happen in Pakistan. क्योंकि शहरों में ज़रूरत है. Like in the गांव, right? We have systems. For women, they already have kind of life figured out in a particular way. शहर में you're going out, तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वर्क काम के लिए जा रहे हो, you're traveling a lot of the time, you need those things. यहाँ के मसाइलों के अपने मसाइल हैं, लेकिन मैं सईद कुतुब की बात कर रहा हूँ कि what he points out in the church is exactly what we are going through with the Muslim community right now. You have the older generation who want to stick to their old style stuff, but then as soon as you get the American kids जो Americanized है, they want to remodel the everything. And मेरा मकसद ये भी नहीं है कि तुम पुरानी चीज पे रहो, but what I'm saying is that this is a warning to take, कि तुम जो commodification में लगे हो, like he gives the example of जो खूबसूरत लड़की मस्जिद में आती थी, right, to और वो पादरी हमेशा उसके बारे में पूछता था ताकि जो लड़के हैं वो भी आ जाए, right? And Sayyid Qutb is like, what's the purpose? मतलब तुम चाहते क्यों कि वो मस्जिद, like अगर तुम लड़की देखने आ रहे हो तो फायदा ही क्या है? And that's exactly the argument I was having. I said, अगर तुम इसलिए आ रहे हो कि because like, oh, I wanna have fun, or this is a good concert or some sort, right? Oh, I'm just gonna stay the whole night and just roll around, be a darwish and whatever, right? It is complete kind of commodification of Sufism, a commodification of just nasheed and all this kind of stuff. I mean, Justin Bieber nasheed. Do you know Justin Bieber nasheed? नहीं, मुझे नहीं पता. Okay, American genre. I call it Justin Bieber nasheed. I don't know what they call it, but I named it Justin Bieber nasheed. Right? They take a nasheed, they take a naat, and what they're basically doing is they will take a song, like for example, I don't know, take any like pop song. Oh, is यहाँ this the तक one कि where मतलब where they take the nasheed and put it in that kind of soundtrack and beats? they take the song, they take like a pop song, like just imagine any like really favorite. I mean, you would find like for like the worst songs, like like the most disgusting songs, they'll take it, and all they will do is at the end of like the lyric, they will add one Islamic reference to Islamify the song. I mean, like, अब मैंने वो सिर्फ एक दफा सुने थे. मैं एक बंदे के साथ ट्रैवल कर रहा था और उसने पूरे रास्ते में वो नशीद लगाए थे. And they said they're really famous in America.
And I was like, अगर तुम Justin Bieber के song को, right, take any like song, I don't even remember Justin Bieber के songs anymore, but take any song, and you're gonna just change like the last word. Oh, Havana, Havana. तुमने Camila Cabello का गाना सुना है Havana? नहीं नहीं डूटे, हाँ हाँ सुना हुआ है, सुना हुआ है। Yeah, like they take Havana. हाँ Soundtrack same hai, Ghana same hai, everything's the same. There's only one difference. Medina or Nana. They just changed oh Havana to Medina. yeah, I think I've heard this one. Right? And I said, Medina, even the name of Medina, to Muslims around the globe, एक sacred सी चीज है, हाँ right? There's just a sacred feeling to it. अब मुझे बताओ कि मैं ये गाना सुन के बड़ा हूंगा. You think I'm gonna have any sacred feelings for Medina? हम्म Americans, like American blood, is so against like anything metaphysical. I'll give you another example. मेरा एक बहुत करीबी बनता था, एक हाफिज, right? So he's a हाफिज. वो कैफे में बैठकर कुरान खोले, कुरान को देख रहा है. He's हम्म studying Quran. And there is a song playing. Right? एक गाना बज रहा है. This is a normal song. तो गाना बज रहा है. वो वहां टेबल पे इधर पड़ा हुआ है. And just like you and I would have like any book open, right? He has a Quran open. There is no like attention to it. It's just like there. He's like holding and he's sometimes reading it, sometimes stopping, like just a complete there. And ये एक हाफिज बंदा है, right? And this is an extremely conservative banda, by the way. हम्म This is not a liberal. एक बहुत ही conservative बंदा. And he's just sitting there and I'm thinking, मेरा एक दोस्त उसे कहता है, क्या तुम क्या कर रहे हो? Right? मतलब कुरान खुला हुआ है, right? And he's surprised कि मतलब like am I not supposed to do this? अब तुम अपनी अम्मी अब्बा का सोचो कि what would happen, by the way, no, but I'll tell you, there is something like वो कैसे थे, I think हाँ फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहते हैं, ईगो सुपर ईगो इट का ना. yeah, And yeah, it's like, for example, if you're doing something and automatically you will just start thinking के what will your parents think, right? For yeah, example, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, this is what happened to me recently. किताब किधर है? अच्छा, मैं वो मौलाना मदूदी साहब की ना वो uh-huh. कैसे तो किताब लाया कैसे थे, एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि यार मैं कहाँ देखूं, क्योंकि बाय चांस अल्लाह ना करे, लाइक ओके देयर इज लाइक अ लेवल ऑफ Yeah, रिस्पेक्ट एनीवे. yeah. मैंने ना पहले उसको इधर रखा, ओके, then I put it here and now I put it over here on this side at the top ताकि Yeah, कैसे थे वो now, and now this is instinctive ना, this is yeah, just automatic yeah. वो. Dude, I'll give you an example. मेरे पास Bible, right? So I have a Bible, हाँ and Bible में मतलब Bible is not, and it's an English Bible, right? So there's nothing special, like there's nothing special to it, right? हाँ But एक दफा मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था, and I was reading the Bible, and I just put it there, and मैंने उल्टा रख के वहां पे बेड पे ही रख दिया. हम्म I went out, right? Like I stepped out of my room, but I हम्म felt so bad. हाँ हाँ वो मेरा अरे like वो instantly जहन में आया. इंस्टिंक्टिव हाँ. हाँ. So I came back, right? And मेरा बस जा रहा था, and I just quickly picked it up, I put it on the top shelf, and I just ran outside. And it was so instinctive. And जब मैं बस में जाके बैठ गया, and I just started thinking about it, and I'm like, there is people I know who हम्म wouldn't even do this for the Quran, and it's not because they don't have respect for Quran. हाँ It's just that they don't have a, an instinct, जो feeling, जो एहसासात होते हैं ना, of something sacred, of हाँ just like, oh, this is something sacred, this is something higher. So I think every like हर बंदे को, because America is, Americanization is the dominant reality, right? मैं कल्चरल जब जेमनी एक तरीके की. Exactly. और मैं जब अपने कल्चर को देखता हूँ ना, I see it, like 20 years ago it was different, now it's different, and I see this like complete, consumerism and all this stuff is just bumping up. And मेन स्ट्रीम हो रहा है. yeah, and उदासी के साथ कहना पड़ता है कि I think we take the worst in the worst amount. Like जितनी कंज्यूमरिज्म हम में आ रही है ना, और आ चुकी है काफी हद तक, हम्म वो वहां पे तुम्हें भी नहीं मिलेगी. जो शाह से आगे शाह का घोड़ा, like we are like literally just like squeezing it inside, right? And अगर तुमने like इस sacred की जो sacred का idea है, like the idea of okay, something, this is a material thing, but this is sacred. This is connected to something sacred or something beyond even the senses. तुम नहीं देख सकते, but it is something sacred. Maybe that's why, like, अगर तुम उनको देखते हो in wearing like shirts about Jesus, and just like it has the most horrible stuff written on it, right?
Oh, have you heard saying about Gen Z Bible? Gen Z Bible. no. It is a Bible Mhm. written in Gen Z lingo. Okay? अगर मैं like this is not something to say on YouTube, but I would do like things to the person if I knew. It is the most non-sacred. It's the most like blasphemous act you could do. In my opinion, like if you're burning the Bible and you're doing like the Gen Z translation, they're the same thing. Because like literally, you're saying things like like oh Jesus had infinite aura and that kind of wording, and it's the whole Bible, and it's just literally just like saying this stuff, and like the whole point is just like oh, and I think there were some fathers who actually said this is like good, like they approved it because they were like oh this is There's like a lot of what you call हम लोग एक बिल्कुल different side पे जा रहे हैं, but there's a lot of issues with क्या कहते हैं the core elements of Christianity anyway, but that's like another discussion for another time. yeah. But By हाँ, the way, by the way, and at the heart of it all is the commodification, and this is what he says as well, right? To say Kutub कि there is a manifestation of वो जो कैसे थे जो American dream था, ठीक है, mhm, कि वो early settlers आए, they had nothing, ठीक है, yeah, मतलब कि दे हैड अ ब्लैंक कैनवस ऑफ सॉर्ट, एंड बिकॉज वो इनलाइटेंड माइंड के थे, जैसे तुमने कहा ना, दे हैड ऑल yeah, दिस साइंस दैट वाज पम्प्ड इनटू देम, और रिलीजन वाज टोटली डिवॉइड ऑफ दैट. yeah, तो आप जो मर्जी करते रहो, एज लॉन्ग एज कि योर वो बड़ी मैकेविलियन सी सोच है, बट योर मींस जस्टिफाई द एंड, एज लॉन्ग एज आप yeah. अपना गोल अचीव कर रहे हो, मतलब आपने अगर एक And मिलियन the डॉलर. ends are always material. The हाँ ends are always material. हाँ. एंड यार By मैं. the way, there's a book, I forget the name of the book, but एक किताब थी, एक औरत ने I think लिखी थी. मेरे Christian father, there was a Christian father जो हमारा उस्ताद थे, उसने मुझे recommend की थी, and he said उसमें वो basically सारे जो अमेरिकन में religion लोग हैं ना, वो उनको देखती है, right? And America is a very religious society, by the way. लोगों को लगता है कि Americans are very liberal. They care about religion. Like it's much more religious than Europe and stuff. हाँ Like हाँ. right, and churches are big and they're but वो उसमें I forget the name. I think we'll add it here. I'll find it. But उसमें जो basically argument वो बनाती है ना, she's like Americans believe in individual religion, हाँ, right? प्राइवेटाइज्ड है ना एक तरीके से. Yeah, and वो एक religion, उनके जहन में religion का idea ये है, you go, you get the book, जो भी तुम्हारी किताब है, हम्म. you take the things you like, हम्म. and that's your religion. एग्जैक्टली. Like yeah, it's just a complete like marketplace. It's a marketplace, but तुम religion भी choose नहीं कर रहे. Like it's not even a marketplace of okay, I'm gonna be a Muslim. No, no, no. It's a market. I'm gonna take Quran and I'm gonna take these 10 verses, and this is my religion, right? I'm gonna be a Christian, or मेरे religion में सिर्फ एक ही चीज है, right? Jesus was love and God is love, and this is my religion, right? I'm not this is what it is, right? And I think it's such a profound idea. And चूंकि मैं बहुत ज्यादा religion By के the साथ way, attached हूँ वहाँ पे. somebody said this. Somebody said if you try to, I don't know who it was. It was basically if you try to find God this way, you will end up believing in the divinity of America. तो वही होता है. Yeah, I mean, we had this discussion जहाँ मैंने तुम्हें बताया था कि liberals. Oh, I think it was in the जब हम बात कर रहे थे. But के two videos you should watch about something like this, right? पहली जो हमने video की थी about amusing yourself to death, ourselves to death, right? That's what he's talked about when जब वो religion की बात करता है. That's what he talks about. But the second video is ghazali की definition of Islam, like उसमें जब वो बात आती है तो मैंने तुम्हें बताया था कि liberals जो होते हैं ना, or secular Muslims or anyone like that, what they don't understand is you by definition cannot be something like that. ना. क्योंकि as soon as accepting Islam, like being a Muslim, means accepting the corpus, right? जो हमारी किताबें हैं. You can have And a as soon variation of differences and opinions within the that's framework. exactly. लेकिन तुम्हें आर्गुमेंट करनी पड़ेगी स्क्रिप्चर के साथ. You're हाँ. basic. You cannot do this. तुम कुरान में जाके ये नहीं कह सकते. Okay, I'm gonna take 1,000 verses and I'm gonna leave the rest. What हाँ, you can exactly. do, you have to go and you have to say, I'm gonna work with the Quran. Okay, इस आयत के बारे में 10 opinions हैं. I'm gonna that's like open to you. Working with the religion. And उसमें भी तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं चलेगी. It's not like a postmodernist like oh this is how I feel. No, no, no. There's a range of opinions. It's like a highway, right? तुम first lane, second lane, third lane, fourth lane, you have lanes. What you don't have is
I'm just gonna choose some part of the road and I'm gonna jump over the rest of हाँ the ऐसे ही road. है. Yeah. And that's, I think, what he's really getting correct when he says the pages up, वक्त गुजर जाएगा and American empire खत्म हो जाएगी By the way, and people will look back. this was very like, just to end on this, right? He Yeah. says America's share of human value. Yeah. This great America, what is its worth in the scale of human value, and what does it add to the moral account of humanity? And by the journey's end, what will its contribution be? And I thought this was very, like, this was my favorite bit. Matlab, this is very first page as well. I fear that a balance may not exist between America's material greatness and the quality of its people. I fear that the wheel of life will have turned and the book of time will have closed, and America will have added nothing or next to nothing to the account of moral and distinguished man from object, and indeed mankind from animals. And this is essentially what is at the heart of the issue. कि ठीक है, you have all these great cars and you have all these great things, but what do you actually give to the world? What is it that, मतलब आप दुनिया को क्या दे रहे हो? And the core of that is कि there is nothing that America has given to the world in last 200 years that has improved the value of human existence, not कि material existence. Sure, कि these laptops and all, but even if these laptops did not exist, if these cameras and if this YouTube and all did not exist, the core of human existence का जो मसला है वो उधर ही रहता है कि it has added nothing to it. Essentially, The moral. and if you make a case for it, they have done so much negative, Yeah. so much negative, and we are on the verge of another disaster if God World forbid. War III. Yeah. हाँ. Yep. मतलब कि what has it added? A nuclear bomb to the world arsenal. ठीक है. The only country कैसे that has blasted 2 nuclear bombs. We are on the verge of कैसे another war. God forbid, but at the end there is hope. Given the wheels of time have turned, we'll have a better account of these things. That's what you call. But बहुत कमाल की कैसे the pamphlet. I do encourage you all to read it. Give your ideas on this as well. But a brilliant commentary on American life. Yeah. Yeah. I'll just end this with one thing. ये मुसलमानों के लिए, and मैं चाहता हूँ तुम लोग इस बारे में सोचो, right? The golden age of Islam, which is not the Abbasid age, जिस तरह लोग कहते हैं, okay? The golden age of Islam, which is the Khilafat Rashida, right? Khilafat Rashida min Hajj al-Nabuwa. What did it add in material terms? And what did it add in human values? हम उसको कहते हैं ना, this is our model. This is the great model of, like, अगर best होता तो इस तरह होता, right? So I want you to go and think. What technology did Abu Bakr, or Umar, or Osman, or Ali, what did they make? And what did they provide? And if they did not provide much, अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, तो फिर ये सवाल पूछो कि how are they the greatest model for Muslims, right? Because they are, everyone agrees. And this comes in a sharp contrast. I know we have to end this. Okay, if they are the greatest model and they have not achieved the material success जो आज हम लोग कैसे कहते हैं try कर रहे हैं achieve करने को, then what is the alternate? What is this other thing that they have achieved? Yeah. And that is what we have to grapple किस with. बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं कि okay, इस वजह से हम इसको मॉडल समझते हैं. This is like because Islamic expansion didn't even start at that point, but it wasn't that Islamic expansion का argument तुम नहीं दे सकते, because as soon as तुम वो argument देते हो, फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम का दौर जिसमें कोई expansion नहीं हुई, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, उसको compare करना पड़ेगा, let's say for example जो बाकी दौर आए, right, the Ottoman times or whatever, फिर तुम्हें you cut yourself off the legs, right? Exactly. Right. तो तुम लोगों को जाके ये सोचना है कि किस बुनियाद पे हम कहते हैं okay, खिलाफा मिन हाज नबुवा, this is the ideal. Okay, and we'll end it with this. Okay. So thank you everyone. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe, and comment on it. And thank you, Afnan. Oh, अपने opinions लाजमी देना. Like anyone. That would be interesting. Chalo, thank you guys. Allah Hafiz. Allah Hafiz.